Hello, dear students. Today we're taking some questions of general solutions. Yesterday we discussed about the formulas and we're taking some questions of general solutions. मैंने आपको बोला था, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने बोला था कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो एंड सेंड मी, ओके, एंड जस्ट से अटेंड द लेक्चर. तो दो चार स्टूडेंट ने बोल दिया सर अटेंडेड. तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो बोलूँ, ओके. टुडे व्हाट आई कैन से, क्या बोलूँ आपके लिए कि वी हैव टू से. अब मैं खुद कैसा बोलूँ कि सर लेक्चर वाज फैंटास्टिक एंड ऑल दिस. आपको जो भी लगता है वी हैव टू कमेंट इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं. विल ट्राई माई बेस्ट. घर से स्टडी कर रहे आप, घर पे बैठ के घर से लेक्चर ले रहे. आई एम कंसिडरिंग दैट यू आर इन फ्रंट ऑफ मी. Just like that, you have to consider that I am in front of you. Okay, so like that क्लास में कैसा थोड़ा हंसी बहुत माहौल रहता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मिल रहा नहीं है मौका कि कुछ बात कर सके rather than the teaching. तो just we trying that कि मुझे भी लगना चाहिए कि यार just like the हमेशा मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, तो आपके कमेंट्स से मैं भी मोटिवेट हो जाऊँगा. So that's why I'm saying, okay, no problem. As your wish. What today we're taking some questions of related to general solutions. Okay, so let us start the very first question. Write it. क्या first question ask अपना? Yes, cos 4x is equals to cos 2x. Cos 4x is equals to cos 2x. हमें फाइंड करना है x का वैल्यू. किसका वैल्यू फाइंड करना है? x का वैल्यू फाइंड करना है. ओके, सो टेकन cos 4x is equals to cos 2x. ओके, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? करेक्ट. कौन सा? यस. इफ cos theta is equals to cos alpha, what is theta? It is 2n pi plus or minus alpha. So here we are taking 4x is equals to, therefore 4x is equals to 2n pi plus or minus 2x, and this is not our final answer. What I am saying, हमको फाइंड करना है x. क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है. So therefore 4x is equals to 2n pi plus 2x, or 4x is equals to 2n pi minus 2x. It is 2x. Okay, plus or minus 2x. So first time we are taking the positive, second time we are taking the negative. Simple. So plus 2x convert into minus 2x. 4x minus 2x is 2x is equals to 2n pi. So what is the value of x? n pi. Or here minus 2x convert into plus 2x. 6x is equals to 2n pi. What is the value of x? 2n pi upon 6. It is n pi by 3. So x has the two values. X is equals to n pi, or x is equals to n pi by 3, and both are correct. No doubt n belongs to the z. थोड़ा फास्ट लेंगे क्वेश्चन, बहुत इजी है. ओके, नेक्स्ट one. नेक्स्ट क्वेश्चन में cos 3x is equals to sin 2x. cos 3x is equals to क्या है? sin 2x. इसको कैसा सॉल्व करेंगे? cos 3x is equals to sin 2x. How can solve it? इसको कैसे करेंगे? Convert the sign in the form of cos. Okay, so you taken cos 3x is equals to cos. What is sin theta? It is cos pi by 2 minus theta. So you have to take the pi by 2 minus 2x. Very good. In the form of cos theta is equals to cos alpha. What is theta? 3x is equals to 2n pi plus or minus theta.
थीटा यानी कि पाई बाय 2 माइनस 2x, पाई बाय 2 माइनस 2x। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन टेक वन टाइम पॉजिटिव एंड सेकंड टाइम एज अ नेगेटिव। सो 3x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 2x, और 3x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 3x इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस ले रहे हम माइनस पाई बाय 2 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2x। समझ में आ रहा है ना? प्लस 2x। सो माइनस 2x कन्वर्ट इंटू प्लस 2x, 3x plus 2x is 5x. So you get the 5x is equals to 2n pi plus pi by 2. Okay. So what is the value of x? Therefore x is equals to, I am taking here, जगह नहीं है तो एडजस्ट कर रहे, 2n pi upon 5 plus pi by 2 pi is 10. This is the one value of x. Okay. Sec, again we are taking 2x converted into minus 2x. 3x minus 2x is x. X is equals to 2n pi minus pi by 2. This is the second value of x, and both are correct. Got it? Write it carefully. Then we take the next question. Next question देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेंगे आज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? If sin x is equals to tan x, then find the x. Sin x is equals to tan x है। जनरल सॉल्यूशन में x का वैल्यू फाइंड करना है, क्या करेंगे? Convert the sin in the tan in the form of sin and cos. Okay, so you get the sin x is equals to sin x upon cos x. Don't cancel the sin x, sin x. Okay, आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते because you don't know the value of sin. Okay, तो कैंसिल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? sin x into cos x is equals to sin x. Have you got it? Then again sin x into cos x minus sin x is equals to क्या? 0. Have you got it? So taking sin x common, sin x in bracket cos x minus 1 is equals to क्या मिलेगा हमको? 0. समझ रहा है ना आपको? बहुत सिंपल है। So you taken the sin x common, got it? In bracket cos x minus 1 is equals to 0. अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों में से एक टर्म क्या होगा? 0. So you taking sin x is equals to 0 or cos x minus 1 is equals to 0. If sin x is equals to 0, we know x is n pi. अब cos x minus 1 0 है, तो इसका मतलब cos x क्या है? 1 है. And when the value of cos function is 1, if the angle is 0 rad, so you get the cos x is equals to cos 0. समझ में आ रहा है? तो if cos theta is equals to cos alpha, what is theta? It is 2n pi plus or minus alpha. So x is equals to 2n pi plus or minus 0, मतलब 0. प्लस और माइनस 0 एक मतलब लिखने की जरूरत नहीं है. So what is the value of x? It is 2n pi. X is equals to n pi or x is equals to 2n pi. Got it? We take the next one question. यहाँ पे if cos x is equals to cos 0, x is 2n pi plus or minus 0. So we are not taking that plus or minus 0. So we are taking only x is equals to 2n pi. Okay. Next question. फोर साइन एक्स, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है.
4 sin x into cos x plus 2 sin x plus 2 cos x plus 1 is equals to 0. Okay, is equals to 0. क्या दिया है क्वेश्चन हमको? दिस इज 4 sin x into cos x plus 2 sin x plus 2 cos x plus 1 is equals to 0. तो इसको कंसीडर करेंगे हम एज ए इक्वेशन, मीन्स नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ये रहता था 2xy plus xy या 2x square y plus xy, तो xy कॉमन निकालेंगे जस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल. तो हम यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस टू टर्म्स? इससे डिसाइड होगा कि ये टर्म से क्या कॉमन निकालना है. सो व्हाट वी टेक इन द कॉमन फ्रॉम दिस टू टर्म्स? Here 2 sin x or here is also in the multiple of 2 sin x. So we take the 2 sin x common. क्या common निकाले हम? 2 sin x. So what remains here? 2 cos x. 2 sin x common निकाला है. इसका मतलब है 1. अब यहाँ पे term already 2 cos x plus 1 है. तो common क्या निकालेंगे? There is no common factor between these two. So we have to take the common 1 plus 1 in bracket 2 cos x plus 1 is equals to 0. Okay, so again we get the first bracket 2 cos x plus 1 into 2 sin x plus 1 is equals to 0. Okay, so what is the value of 2 cos x plus 1? It is 0, or I am writing the or 2 sin x plus 1 is equals to 0. Okay, so what is the value of cos x? Cos x is equals to minus 1 by 2, plus convert into minus, or sin x is equals to again minus 1 by 2. आगा याद ASTC, when the cos is negative, if it lies in second and third quadrant. Okay, so we taken the cos x in a third quadrant, second quadrant. Okay, minus 1 by 2 कब एंगल है? pi by 6 है ना, तो pi minus pi by 3 करना पड़ेगा. सॉरी, pi by 3. when by 2 वैल्यू कब है cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की? if the angle is pi by 3. तो pi minus pi by 3 करना पड़ेगा by using the allied angle because it lies in a second quadrant. Okay, समझ में आ रहा है आपको? so cos pi minus pi by 3 is the 2 pi by 3. और यहाँ पे आएगा sin x is equals to sin निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड एंड फोर्थ में. तो 1 by 2 वैल्यू किसके लिए है? पाई बाय 6 के लिए. तो हमका करना पड़ेगा sin थीटा. ओके, पाई बाय 6 तो माइनस sin थीटा है, तो sin पाई प्लस थीटा इज माइनस sin थीटा. तो पाई प्लस पाई बाय 6 लेंगे बिकॉज 1 by 2 के लिए पाई बाय 6 है. sin पाई बाय 6 इज 1 by 2. पाई प्लस पाई बाय 6 इज 7 पाई बाय 6. अब ये सब हमने बहुत बार प्रैक्टिस किया 11th में, अपने भूलना नहीं चाहिए. ओके, सो इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, व्हाट इज थीटा? 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, दैट इज 2 पाई बाय 3. इफ cos sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा, व्हाट इज थीटा? n पाई प्लस माइनस 1 raised to n into 7 pi by 6. These are the two values of theta. Are you got it? Write it carefully. और इसको प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है. Then you take in the next one. आज कुछ ही क्वेश्चंस लेंगे हम, चूजिंग द सम क्वेश्चंस. कल फिर से इसको थोड़ा डेप्थली स्टडी करेंगे. मैं आपको कल वर्कशीट दूंगा, आज ही वर्कशीट दूंगा, वो वर्कशीट आपको करनी है ठीक से. तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस लेंगे और सेम क्वेश्चंस लेंगे प्रैक्टिस के लिए. कल
next one. Next is tan x minus 3 tan cube x. Tan cube x minus 3 tan x is equals to 0. इसका x का वैल्यू फाइंड करना है फॉर द जनरल सॉल्यूशन. ओके राइट. क्या दिया है क्वेश्चन? tan cube x minus 3 tan x is equals to 0. Okay, take the tan x common. Tan x in bracket, what remain? Tan square x minus 3, because tan x हमने कॉमन निकाला है. tan x क्या निकाला है? कॉमन निकाला है. So we get the tan x is equals to 0 or tan square x is equals to, या tan square x minus 3 is equals to 0. एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. If tan x is 0, what is x? X is equals to n pi. If tan theta is 0, theta is n pi. Okay, and here we get the tan square x is equals to 3. Can I write in this way? Tan square x is equals to, कल आपने डिस्कस किए थे क्वेश्चन, 3 का मतलब क्या है? रूट 3 का स्क्वायर. रूट 3 किसकी वैल्यू है? tan, करेक्ट, पाई बाई 3 की. So tan square x is equals to tan square pi by 3. For the pi by 3, tan has the value root 3. Okay. If tan square theta is equals to tan square alpha, what is theta? What is theta? Theta is n pi plus or minus alpha. So x is equals to n pi plus or minus pi by 3. These two are the values of x for the general solution. Okay. Next one. We take the next question. Sec square 2x. Sec square 2x is equals to 1 minus tan 2x. 1 minus tan 2x. Again, general solution find करना है आपको. So we taking sec square 2x is equals to 1 minus tan 2x. Are you know sec square theta? That you studied in 10th standard or 11th also. Sec square theta is 1 plus tan square theta. Applied. क्या है sec square theta? 1 plus tan square theta. Instead of theta, it is 2x. So sec square 2x is 1 plus tan square 2x is equals to 1 minus tan 2x. होगा simple. 1 get cancelled. So you get the next one step. Tan square 2x minus tan 2x convert into plus tan 2x is equals to 0. क्या कॉमन निकालेंगे? करेक्ट, tan 2x. Tan 2x in bracket, what we get? Tan 2x plus 1. क्योंकि हमने tan 2x कॉमन निकाला है, तो क्या मिलेगा हमको? The product of these two is 0. So इसका मतलब tan 2x is equals to 0 or tan 2x plus 1 is equals to क्या है? 0. If tan theta is 0, what is theta? n pi. So therefore 2x is equals to n pi. इसका मतलब x का वैल्यू क्या है? n pi by 2. ये एक वैल्यू आ गया. दूसरा वैल्यू मिलेगा हमको if tan 2x is equals to minus 1. अब निगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan 3 pi by 4. समझ में आ रहा है ना? ओके. सो tan 2x is equals to tan 3 pi by 4. Okay. If tan theta is equals to tan alpha, what is theta? It is n pi, only positive alpha. If tan theta is equals to tan alpha, what is theta? Theta is n pi plus alpha. So therefore
2x is equals to n pi plus 3 pi by 4, क्योंकि हमको वैल्यू फाइंड करना है x का, तो 2x को तो नहीं ले सकते हम, तो डायरेक्टली हम क्या करें, x is equals to n pi by 2 plus 3 pi by 8. Very good. It goes in the form of division. Write it properly. Write it. Next one. So this is the last question. क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस को दूंगा, उसके बाद उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे. आप घर पे ट्राई करो. Then I am taking the each and every question in next lecture. Okay. So next one is sin 2x plus sin 4x. क्या ये दे दो आपको होमवर्क के लिए. Okay. Sin 2x plus sin 4x plus sin 6x is equals to 0. दे दो ये आपको होमवर्क में. ओके, सॉल्व करेंगे. बहुत सिंपल है. 6x 2x एक साथ लेंगे. ओके, कैसा करेंगे इसको सॉल्व. sin 6x plus sin 2x plus sin 4x is equals to 0. It is considered as a sin c. This is the sin d. Are you know the expansion of sin c plus sin d? Correct. It is 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Using that. So you are taking sin 2 sin 6x plus 2x 8x. 8x upon 2 is 4x. समझ रहे हैं ना आपको क्या हो रहा है. Have you got it? Sin c plus sin d is equals to 2 sin c plus d by 2, 6x plus 4x, 8x. 8x upon 2 is 4x into cos c minus d by 2, 6x minus 2x, 4x upon 2 is 2x plus sin 4x as it is equals to 0. अब क्या कॉमन निकालेंगे हम. sin 4x. So you taken the sin 4x common. ब्रैकेट में क्या बचता है, 2 cos 2x plus 1 is equals to 0. Got it? इसका मतलब sin 4x की वैल्यू कितना है, करेक्ट 0. और 2 cos 2x plus 1 की वैल्यू कितनी है, 0. If sin theta is 0, what is theta? n pi. Therefore 4x is equals to n pi. और cos 2x is equals to, मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, plus 1 convert into minus 1 and that 2 goes in the form of division. Got it? So what is the, if 4x is n pi, x is n pi by 4. Okay? If cos 2x is equals to नेगेटिव है, इसका मतलब सेकंड क्वार्टर में पाई माइनस पाई बाय 3 हमने अभी दिया था, बिकॉज 1/2 cos की वैल्यू कब है, इफ एंगल इज पाई बाय 2, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा है, तो माइनस cos पाई बाय 3 का मतलब होता है cos पाई माइनस पाई बाय 3, दैट इज द cos 2 पाई बाय 3. ये आपको आना चाहिए, 11th में बहुत बार रिपीट हुआ है. इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा. अल्फा का मतलब होता है 2 पाई बाय 3. ये वैल्यू आ गई 2x की, हमको चाहिए x. So x is equals to 2n pi upon 2. 2 get cancel. It is n pi plus or minus 2 pi by 3 upon into 1/2 means again 2 get cancel. It is pi by 3. These are the two values of x. होप सो कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा.
उसका आंसर भी समझ में आया होगा। प्लीज़ प्रैक्टिस इट रेगुलरली। मैं आज आपको वर्कशीट प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसकी प्रैक्टिस करो ठीक से। कल हम उसको डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ जनरल सॉल्यूशन की ही, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ जनरल सॉल्यूशन अंडर द हेडिंग, हम उसको कल सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे। आपको लेक्चर्स कैसा लगा है, क्या है क्या नहीं, वी हैव टू कमेंट इट प्लीज। ओके, थैंक यू, हैव अ सेफ डे एंड गुड डे। थैंक यू।